Hello students, in this lecture we will study of introduction of basic terms of current electricity, and the basic terms are electric current, conventional current, electric current in conductors, current density, and finally resistance and resistivity. Electric current. Electric current is defined as the rate of flow of electric charge through a certain cross section of a conductor. Means, let we have a conductor, or from this conductor there are some flow of electric charges, then the rate of flow of electric charge from the cross section of any conductor is called electric current. If there is to be an electric current through a given surface, there must be, this is the necessary condition, there must be a net flow of charge through the surface. Means, if the electric current is associated with the surface of the conductor, then there must be net flow of charge. If the net flow of charge is zero, then current will not be appear. There must be a net flow of charge through the surface. If charge dq passes through an imaginary surface in time dt, then current I through that surface is defined as I equals to dq upon dt. There is the rate of flow of charge varies with time. जो ये चार्ज फ्लो है ये टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है. देन I equals to dq upon dt. From here we are able to find out the total charge flow through the surface, and that will be equals to dq equals to I dt. Then the charge that passes through the surface in a time interval 0 to t is, means the charge is flowing from the surface of a conductor in a time interval 0 to t, then that charge will be q equals to integration from the limit from 0 to t I into dt. SI unit of current. So current is defined as the rate of flow of charge, means charge upon time. Charge is coulomb and time is second. Coulomb upon second is the SI unit of current, and this is ampere. Coulomb upon second equals to ampere. So 1 ampere equals to 1 coulomb per second. It means we are able to define the definition of 1 ampere, that is equals to 1 coulomb per second. 1 ampere. When 1 coulomb charge flows through an electric circuit in 1 second, then current flowing through the circuit is 1 ampere. Means अगर किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, देन फ्लो होने वाला जो करंट है दैट विल बी 1 एम्पियर. ओके, नाउ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्जेस. मीन्स जो करंट का डायरेक्शन होता है वो वही होता है जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होता है, और अपोजिट होता है to the flow of negative charge flow. The current I equals to Q upon T. Directly we can say that charge per unit time, if the rate of flow of charge is steady, means rate of flow of charge जो है वो constant है, then Q upon T. And if the rate of flow of charge varies with respect to time, then it will be dq upon dt. There are some graph in between current and time. So this is the straight line, constant curve line, and according to this current is constant with respect to time, steady current. B is current varying with respect to time, regularly increasing. This is zigzag, the magnitude of current is changing with respect to time. And this is the next graph in between current and time. Here the magnitude is changing with respect to time, as well as the direction also changing with respect to time. At that point
current is 0. Now current is increasing in positive direction and it goes up to maximum value. After that it is decreasing and negative direction, फिर increasing positive direction and decreasing negative direction, like this. That current is called alternating current. और इसके जो हम स्टडी करेंगे, पूरा एक चैप्टर है अपना जो आगे हम स्टडी करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट. Alternating current whose magnitude varies continuously and direction changes periodically. Next, conventional current. So let we have two plates and this plate is positively charged and this plate is negatively charged. It means there will be an electric field and the direction of electric field will from positive charge plate to negative charge plate, like this. In this electric field, the positive charges will flow in the direction of electric field or towards to negative plate. See, positive charges flowing in the direction of electric field. So the direction of the current will be in the direction of flow positive charges. So this will be the direction of current. So conventional current is the current whose direction is along the direction of the motion of positive charge under the action of electric field. Next one, again we have two charge plates. This is negatively charged plate and this is positively charged plate. Now the electric field direction will from positive charge plate to negative charge plate, means along to negative axis, like this. Positive charge plate to negative charge plate, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. नाउ द नेगेटिव चार्जेस विल फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, like this. So the current will flow opposite to the flow of direction of negative charges. This one, this will be the direction of current, means the direction of the current will be in the direction of flow positive charge and opposite to the direction of flow of negative charge. Conventional current due to motion of electrons is in direction opposite to that of motion of electrons or negative charges. The next topic is electric current in conductors. So conductors में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते रहते हैं. The free electrons, conduction electrons in an isolated conductor are in random motion, zigzag curve in all direction and on an average same number of electrons passes each side of an imaginary surface. Means ये जो रैंडम मोशन है, तो किसी भी कंडक्टर में हमने एक सरफेस, इमेजिनरी सरफेस अगर हम एज्यूम करते हैं तो उससे पास होने वाले जो चार्जेस होते हैं वो नेट चार्ज 0 होता है. सो द नेट चार्ज पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज एनी टाइम इंटरवल इज 0. सो द करंट थ्रू द कंडक्टर इज 0. तो अगर आपके पास कोई कंडक्टर रखा है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन होती हैं और ये रैंडम मोशन होने की वजह से वहां पे ओवरऑल फ्लो ऑफ चार्ज जो है या नेट फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो 0 होता है. सो कंडक्टर के इनसाइड करंट 0 होता है. बट व्हाट विल हैपन इफ द कंडक्टर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी और देयर विल अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या होगा जब कंडक्टर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं या इसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं. So let us consider that we have this conductor and the length of the conductor is L and cross section area is A. This is the cross section area of the conductor and this is the length of the conductor. It is connected to a battery. See, this end of the conductor is connected to the positive terminal of the battery and this end of the conductor is connected to negative terminal of the battery. Now when there is some potential
क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी आपने कनेक्ट की है, कनेक्टेड बैटरी का जो पोटेंशियल है वो V है, तो यहाँ पे आपने पोटेंशियल क्रिएट कर दिया इन बिटवीन द एंड ऑफ दिस एंड दिस. ड्यू टू दिस पोटेंशियल देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये वाली डायरेक्शन होगी, दिस टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर विल ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और opposite to the direction of electric field. So the positive charge will flow in the direction of electric field and negative charge will flow opposite to the direction of electric field. This is the direction of electric field. So positive charge will flow in the direction of electric field, this one, and negative charge will flow opposite to the direction of electric field. So the current, the direction of the current will be अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज का फ्लो ये है, तो आपके करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ये वाला रहे. तो ये कंस्ट्रक्शन है जो हमने अभी एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया है उसका. फाइनली देयर इज द नेट फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विवेलेंटली flow of net positive charge in the direction of electric field. So an electric current flow through the conductor in the direction of electric field. Next one is current density. The magnitude of current density vector at any point is equals to the ratio of current delta I through an elementary surface perpendicular to direction of the current at that point to area element of elementary surface. Means the current density J equals to delta I upon delta S. Okay, means this is the direction of the current, this is the surface. Now the surface area element is in this direction, इस direction में है, and there is the angle between current direction and ds direction is theta. So J equals to di upon ds cos theta. ds cos theta is the component of a surface element in the direction of the current. So di equals to j ds cos theta. So I equals to क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ j वेक्टर डॉट ds वेक्टर. यहां से क्या पता चल रहा है कि देयर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस. तो ds जो सरफेस एलिमेंट होता है दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब j वेक्टर भी क्या होना चाहिए, आपका वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए. इवन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन करंट डेंसिटी आपका क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा. एंड इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. Now next one is resistance and resistivity. When some potential difference is applied across the end of two conductors of same shape and size but made of different material, different current flow through them. The property of the conductor that makes difference means अगर आपने potential different अप्लाई किया है, ठीक है, देन आपका करंट भी डिफरेंट होगा. तो ये जो प्रॉपर्टी है जो डिफरेंस प्रोड्यूस कर रही है दैट इज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर is the ratio of applied potential difference V across those points to the to the current I that flow through the conductor. Then the resistance R equals to V upon I. Potential divided by current. SI unit of resistance is volt upon ampere. From here R equals to V upon I. So volt upon ampere. And volt upon ampere is ohm. And 1 ohm equals to 1 volt per ampere. Means अगर किसी कंडक्टर पे आपने 1 पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और उसका करंट आपका 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, देन जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 1 ओम. सिंपली जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है अपोजिशन. मीन्स करंट का जो अपोज करें, जो फ्लो का अपोज करें. नेक्स्ट वन इज रेजिस्टिविटी. रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट अपोज द फ्लो ऑफ चेंज और
flow of electric current means change नहीं sorry charge, flow of charge or flow of electric current. It is the resistance per unit length and cross section area. Rho equals to R A upon L. So R equals to rho L upon A means resistance of a conductor is directly proportional to length of the conductor and inversely proportional to cross section of the conductor. So R is proportional to L upon A. So R equals to rho L upon A. Rho is resistivity and proportionality constant. And its unit will be ohm into meter because L is meter, area is meter square, so cancel out. मीटर नीचे बच जाएगा डिनोमिनेटर में, मीटर यहां मल्टीप्लाई होगा रेजिस्टेंस के साथ, देन रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू हो जाएगा ओम इनटू मीटर. कंडक्टिविटी इज ए मेजर ऑफ द इजी एट विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज और हीट कैन पास थ्रू ए मटेरियल. मींस कोई कंडक्टर कितना हीट पास करता है, कितना एनर्जी ट्रांसमिट करता है या करंट का कितना फ्लो करता है, दैट इज द कंडक्टिविटी. ए कंडक्टर इज ए मटेरियल विच गिव्स वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट और थर्मल एनर्जी. मीन्स जो बहुत अच्छा कंडक्टर होगा उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी और रेजिस्टिविटी कम होगी. मीन्स कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, सिग्मा इक्वल्स टू L अपॉन RA because rho is L upon RA. Okay students, thank you.